last session, we saw the physical inventory process. Now, in physical inventory process, we are going to see two different types of physical inventory processes now. One is goods movement blocking and the other is book inventory freezing. So these two options are available while creating the physical inventory documents. लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो हमने इसका यूज नहीं किया था. We saw a simple straight physical inventory process. Now we will see what is goods movement blocking, physical inventory with goods movement blocking, or it is also called as posting block. So physical inventory with posting block or physical inventory with book freezing. So we will see how this works. Now, what is posting block? Physical inventory with posting block. So what is meaning of this? That we will discuss now. So if you see this figure, this explains the physical inventory process with posting block. Now, let us try to understand the scenario. So posting block set in the evening on 26/09. So on 26 September, there was a posting block set in the evening. But before that, a goods receipt of 100 quantity was posted and the stock when the posting block was set was 250. सुबह 100 क्वांटिटी रिसीव किया किसी मटेरियल का, उसका स्टॉक अभी 250 है और इवनिंग को हमने क्या किया, एक फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया विथ पोस्टिंग ब्लॉक. तो पोस्टिंग ब्लॉक्स ऑप्शन सिलेक्ट करके हमने एक फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया टू कैरी आउट द फिजिकल इन्वेंटरी process. Now, what is meaning of posting block? So when you select the posting block while creating the physical inventory document, that material is blocked for all types of postings. आप उसमें कोई भी इन्वेंट्री का मूवमेंट नहीं कर सकते हो. यू कैनॉट डू अ गुड्स इशू, यू कैनॉट डू अ गुड्स रिसिप्ट, सो दैट स्टॉक सिचुएशन ऑफ द मटेरियल नेवर चेंजेस. जब तक आपका फिजिकल इन्वेंट्री प्रोसेस नहीं हो रहा है, जब तक आपका काउंट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तब तक उसके क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं हो सकता. यू कैनॉट डू अ गुड्स इशू, यू कैनॉट डू अ गुड्स रिसिप्ट. तो उसका स्टॉक इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, मतलब आप उस पर कोई भी पोस्टिंग नहीं कर सकते हो. द मटेरियल इज ब्लॉक्ड फॉर पोस्टिंग. आप उस पर गुड्स मूवमेंट नहीं कर सकते हो. सो यू कैन सी हियर 27/09 and 28/09 पोस्टिंग ब्लॉक इज देयर एंड द स्टॉक क्वांटिटीज आर स्टिल सेम. मतलब इस पे कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ. नाउ ऑन 20th of September, what is happening? 255 entered as a count result in the evening. तो 28th को उन्होंने काउंट किया, काउंट आया 255. सो 28th इवनिंग को उन्होंने क्या किया, काउंट एंटर किया. कितना एंटर किया? 255. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ प्लस 5 क्वांटिटीज. सो दे एंटर द काउंट इन द इवनिंग. सो एज सुन एज द काउंट इज कंप्लीटेड, आपने जैसे ही काउंट एंटर किया MI04 में और उसको सेव किया, द पोस्टिंग ब्लॉक इज रिमूव्ड ऑटोमेटिकली. 250 transferred as book inventory to physical inventory document plus posting block removed. तो सिस्टम क्या करता है, जैसे ही आपने काउंट एंटर किया, इट रिमूव्स द पोस्टिंग ब्लॉक एंड इट रिकॉर्ड्स द बुक इन्वेंटरी. सिस्टम का स्टॉक कितना है? 250 है. हमने एंटर किया हुआ भी सिस्टम रिकॉर्ड कर लेता है 255. सो सिस्टम को डिफरेंस यहीं पे मिला. सिस्टम ने पोस्टिंग ब्लॉक रिमूव किया बिकॉज काउंट कंप्लीट हो गया. अभी आप उस पर गुड्स मूवमेंट कर सकते हो. अगेन ऑन 29th, a goods receipt of 75 quantities is done.
So total quantities are now 325. अभी तक डिफरेंस पोस्ट नहीं हुआ है, तो जैसे ही आपने अकाउंट एंटर किया पोस्टिंग ब्लॉक रिमूव हुआ, अभी उसके बाद आप गुड्स इशू कर सकते हो, गुड्स रिसिप्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट डे a goods receipt happens for 75 quantities. The total quantity is now 325. Again, next day 30th of 09, 30th 09, a goods receipt of 45 quantities is posted. Total quantity now is 370. Available stock is 370. And then difference is posted after the goods receipt. So when the difference is posted, how much quantities difference is posted? Only 5 quantities difference is posted, because जब हमने काउंट एंटर किया था तब सिस्टम ने डिफरेंस क्वांटिटी कैलकुलेट किया था, विच वाज 5 क्वांटिटीज। तो 5 ही क्वांटिटी का डिफरेंस पोस्ट हुआ। ऐसा नहीं कि जब हम डिफरेंस पोस्ट कर रहे हैं तब सिस्टम का स्टॉक 370 है, हमने काउंट एंटर किया था 255, तो 370 माइनस 255, ऐसा नहीं होता है। सो व्हेन यू एंटर द काउंट एट द टाइम ऑफ काउंट, जब हमने एंटर किया था तभी सिस्टम ने डिफरेंस कैलकुलेट किया था, वो डिफरेंस आप कभी भी पोस्ट कर लो उतना ही क्वांटिटी का पोस्ट होता है। सो एडवांटेज विद दिस मूवमेंट इज दैट विथ पोस्टिंग ब्लॉक आप फिजिकल इन्वेंट्री का काउंट जब तक ले रहे हो तब तक मटेरियल का क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट डू द गुड्स इश्यूज, यू कैन नॉट डू द गुड्स रिसिप्ट। क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? Clear, sir. Now we will see this in system. Let's carry out physical inventory in SL01 storage location for this material. Copy this material MI01. Okay, AGP to storage location SL01. I'll select here posting block. Enter. I'll select here SL. So in SL02 we will, there is no stock in SL02, SL03. Let's do it in SL03, MI01. Posting block. Enter. Enter the material. So rest everything remains same. Just enter and save it. Display the physical inventory document, and we can see here posting block is selected. Okay. Now once you set this posting block, let's go to the material, copy the material MM03, go to plant stock. And here you can see physical inventory block is updated as X. X means due to physical inventory, material is blocked for movements. So you cannot do any goods movement on this material. Let's try to do some goods movement. Go to Migo. I'll try to do a goods issue to cost center.
450 quantity is there. I'll try to do a 50 quantities goods issue to cost center. Posting only possible. Okay. The period is changed. So we need to convert the period first because this is 1st of August. So month is changed. So at the start of each month, we need to close the previous period and open the new period. Transaction code will be MMPV. Enter the company code here. You can select here today's date and click on check and close period. Why we need to select the date? So from date, system will automatically take the period. If you don't enter the date, then you need to specify the period and fiscal year. So when you specify the date, system will automatically get this period and fiscal year from this date. Execute it. Period closing is completed. Just go back and now execute it. Material AGP2 SL03 blocked due to a physical inventory. Okay, so you cannot do any goods movement. फिजिकल इन्वेंटरी की वजह से ब्लॉक हो चुका है बिकॉज ऑफ दैट इंडिकेटर दैट वी सिलेक्टेड पोस्टिंग ब्लॉक. तो इस मटेरियल पे कोई भी गुड्स मूवमेंट आप नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ द पोस्टिंग ब्लॉक. नाउ व्हाट वी विल डू, we will enter the count. Now 450 is the available stock quantity. We counted it and suppose the count is 460 quantities. 10 क्वांटिटी हमको ज्यादा मिला. So we'll go to MI04 to enter the count and here we will select 460. Now as soon as we enter this 460 and save it, display it, okay, count status is X counted, count date is also updated. If you check the status now of the physical inventory history, counted, the status is counted. Now if you go to MM03 and display that block, now it is changed to A. Earlier it was X, now it is changed to A. So A is physical inventory not yet completed. So with this status, you can still do the goods movement, but with X, you cannot do the goods movement. So when we enter this count, the posting block is removed now. Posting block is removed now. We can do the goods movement because we have counted the quantities. Count is completed, so posting block is removed. And you can see system has recorded the book quantity, that is nothing but system stock, which is 450. Counted quantity is 460, and there is a difference of plus 10 quantities. Now after this, I can do any goods movement. Now if I try to go to do Amigo, goods issue जो अभी हम कर रहे थे, goods issue to cost center, I'll do the same. Quantity 50 quantities. From where you want to do AGP to SL03. Account assignment, enter here 1000. Check and post it. Now the goods movement is posted. If you check the stock quantities now, it will be 400. 400. If you do a goods receipt, that is also possible because the posting block is removed now. Now when you go to post the difference, let's try to post the difference. MI07, enter. Now the difference was plus 10 quantities. So movement type will be
701, sorry. Select it, enter it. So the difference amount is calculated, difference quantity is calculated. Now if you see, difference quantity is 10 because जब हमने काउंट एंटर किया था तब बुक का क्वांटिटी 450 था, हमने एंटर 460 किया था, विच इज रिकॉर्डेड बाय द सिस्टम, और उसमें 10 का डिफरेंस था। तो सिस्टम अभी जो करंट स्टॉक है हमारा विच इज 400, इसके साथ डिफरेंस कंपेयर नहीं करता है। जो हमने काउंट के टाइम पे एंटर किया था वहां पे सिस्टम ने बुक का क्वांटिटी रिकॉर्ड किया था 450, उसका और जो हमने काउंट एंटर किया था उसका ही डिफरेंस होगा। तो जितना डिफरेंस वहां पे कैलकुलेट हुआ था उतना ही डिफरेंस यहाँ पे पोस्ट होगा। And the physical inventory document is posted. If you display this in Migo and check the accounting entries, ठीक है, 10 क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो स्टॉक अकाउंट में प्लस हुआ है एंड इट इज एडजस्टेड टू गेन फ्रॉम फिजिकल इन्वेंटरी। क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. Okay. Now we will see book freezing. Freeze book inventory. What is book freezing? So in book freezing, again the same example. On 26th of September, goods receipt happened for 100 quantities. The quantity at the time of creating physical inventory document with book freezing was 250. Sorry, no. So 250 was the stock. On 27th of 9, so on 2609, we did a goods receipt of 100 quantities, stock quantity is 250. Now, on 27th of 9, book inventory fixed in the morning and 255 counted. तो यहाँ पे क्या है, पहले हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में हमने क्या किया, फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया विथ फ्रीजिंग बुक इन्वेंटरी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग बुक इन्वेंटरी? बुक इन्वेंटरी इज सिस्टम स्टॉक, so we freeze the system stock while creating the physical inventory document. तो फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट को जैसे हम क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे सिस्टम का जो भी स्टॉक है दैट स्टॉक इज फ्रीज्ड। तो सिस्टम उसको रिकॉर्ड कर लेता है कि मेरा स्टॉक अभी 250 है, ठीक है। देन अ गुड्स इश्यू ऑफ 60 quantities posted and you have 190 quantities in the stock. Now काउंट किया, सो ये गुड्स इश्यू जो पोस्ट हुआ है वो आफ्टर द काउंट पोस्ट हुआ है, ठीक है। सो आपने फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया, अपने क्वांटिटीज को काउंट किया, हमने मॉर्निंग में फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया विथ बुक फ्रीजिंग, सिस्टम ने स्टॉक रिकॉर्ड किया 255 एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट। उसके बाद काउंट लिया, काउंट इज 255, फिजिकली उसको काउंट किया, कितना आया 255 आया, हमने अभी तक काउंट एंटर नहीं किया, ठीक है। उसके बाद गुड्स इशू हुआ, कितना 60 क्वांटिटी का हुआ, सिस्टम का स्टॉक कितना है 190,
ठीक है, गुड्स इशू के बाद सिस्टम का स्टॉक 190 है। नो 255 का हमने यहाँ पे काउंट किया था। ठीक है, उसके बाद अभी तक हमने यहाँ पे काउंट एंटर नहीं किया है। ठीक है, तो हमने फ्रेज बुक इन्वेंटरी किया, उसके बाद हमने एक काउंट लिया, 255 काउंट आया, बट सिस्टम में हमने काउंट एंटर नहीं किया है अभी तक। ठीक है, सो आफ्टर दैट यू डिड अ गुड्स इश्यू ऑफ 60 क्वांटिटीज, सिस्टम का स्टॉक 190 हो गया। उसके बाद एक गुड्स रिसिप्ट हुआ, 265 स्टॉक हो गया। उसके बाद एक गुड्स इश्यू हुआ, 215 स्टॉक हो गया। नाउ on 30th September there was a goods receipt again for 45 quantities, so total system stock is 260. Count entered in the evening 255 and difference posted. तो यहाँ पे हमने काउंट को एंटर किया। कितना काउंट एंटर किया? कितना काउंट किया था? 255, वही हमने यहाँ पे एंटर किया। तो जब डिफरेंस कैलकुलेट हुआ, ठीक है, तो कितना हुआ? सिर्फ 5 क्वांटिटी का हुआ। क्यों? क्योंकि हमने बुक इन्वेंटरी को फ्रीज किया था 250, और अभी काउंट एंटर किया हमने 255 विच वाज काउंटेड। ठीक है, तो डिफरेंस कितना था? 5 क्वांटिटी का ही आया। तो अभी स्टॉक मेरा 260 है सिस्टम में, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जब फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया तब जो मेरा स्टॉक था वो मैंने फ्रीज किया था, सिस्टम का स्टॉक मैंने तभी रिकॉर्ड किया था। उसके बाद मैं गुड्स इश्यूज कर रहा हूँ, गुड्स रिसिप्ट कर रहा हूँ, सिस्टम में स्टॉक का क्वांटिटी चेंज हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कितना क्वांटिटी था काउंट करने से पहले वो सिस्टम का मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था और मैंने काउंट भी कर रखा। ठीक है, सो द एडवांटेज विद दिस मेथड इज दैट यू डोंट हैव टू स्टॉप योर ऑपरेशंस। आपका फिजिकल इन्वेंटरी है, इसके लिए आपको ऑपरेशंस रोकने की जरूरत नहीं है, आपको गुड्स रिसिप्ट रोकने की जरूरत नहीं है, आपको गुड्स इश्यूज रोकने की जरूरत नहीं है। वेराज इन पोस्टिंग ब्लॉक 2 दिन के लिए उस मटेरियल का आप कोई भी गुड्स रिसिप्ट या गुड्स इश्यूज नहीं कर सकते थे। इन शॉर्ट योर ऑपरेशंस वेर स्टॉप्ड। बुक फ्रीजिंग में वो एडवांटेज है कि आपके ऑपरेशंस कैन स्टिल कंटिन्यू with book freezing physical inventory method. Now we will do it in system. एक मिनट। 410 is the quantity. Let me create a physical inventory document with book freezing. Now I'm selecting here freeze book inventory option. Enter. Freezing of book inventory balance in storage location is not allowed. So we need to do a config setting.
we need to first allow freezing of book inventory in the storage location. So unless we allow the book freezing for storage location, we cannot use book freezing method. Allow freezing of book inventory balance in storage location. So where it is located? Under materials management, inventory management and physical inventory. In physical inventory, you have it. Allow freezing of book inventory balance in storage location. Execute it. Enter the plant. Here you can see storage location SL03. We are doing book freezing in SL03. Select this checkbox and save it. So once we do this setting, the book freezing is allowed in that storage location. Now let's go to MI01. Select freeze book inventory. Enter. Enter the material. Save it. Now, as soon as we select this book freezing, okay, freeze book inventory. So system records the available stock quantities 410. अभी सिस्टम में स्टॉक कितना है 410. तो इसको सिस्टम फ्रीज कर लेता है. सिस्टम रिकॉर्ड्स इट दैट मेरा जो फिजिकल इन्वेंट्री का बुक स्टॉक है, जो सिस्टम का स्टॉक है, दैट इज 410. नाउ इसके बाद आप इसमें गुड्स रिसिप्ट कर लो, गुड्स इश्यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट बिफोर दैट यू नीड टू टेक द काउंट आपको कर लेना है. ठीक है, तो हमने बुक फ्रीजिंग किया, 410 सिस्टम ने रिकॉर्ड किया. नाउ फिजिकली वी काउंटेड इट. फिजिकली हमने उसको काउंट किया. कितना आया काउंट आया सपोज 430. ठीक है, 430 काउंट आया. बुक स्टॉक is 410, counted is 430. But we will not enter the count. अभी हम काउंट एंटर नहीं करेंगे. हमने काउंट ले लिया बट सिस्टम में अभी हम उसको एंटर नहीं करेंगे. Now what we did some goods movement. Like I did a goods issue for cost. इस क्वांटिटी का किया मैंने. Plant storage location. Post. Okay. Now the available stock is 410 में से 30 चला गया 380. So 380 is my available stock. हमने काउंट किया है 430. अगेन इसमें आप गुड्स इशू कर सकते हो या यू कैन पोस्ट अ गुड्स रिसिप्ट. आप गुड्स रिसिप्ट भी पोस्ट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ वी विल एंटर द काउंट. MI04. एंटर. व्हाट वाज द काउंट 430. सेव इट. डिस्प्ले द काउंट. Check the history. You can see it is counted. And see here. Book quantity is still 410. अभी सिस्टम का स्टॉक कितना है 380 है. अभी सिस्टम का स्टॉक 380 है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बुक क्वांटिटी इज 410 बिकॉज वी फ्रीज द बुक इन्वेंट्री व्हाइल क्रिएटिंग द फिजिकल इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट. तो वहां पे जब हमने फ्रीज किया था तो सिस्टम ने वहां पे रिकॉर्ड किया कि 410 मुझे बुक स्टॉक था. 410 मेरा बुक का स्टॉक था. कब? जब हमने फिजिकल इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट क्रिएट किया तब. तो उसके बाद आप जो गुड्स मूवमेंट कर रहे हो उससे स्टॉक चेंज हो रहा है, उसका आपके फिजिकल इन्वेंटरी पे कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज आपने क्वांटिटी को फ्रीज कर रखा था, आपने काउंट ले रखा था.
ठीक है, तो हमने 430 एंटर किया, सिस्टम ने 20 क्वांटिटीज का डिफरेंस यहाँ पे नोट किया, एंड यू पोस्ट द डिफरेंस इन MI07 and 20 quantities difference is only posted, not 50. Here, any doubt? So with book No, sir. freezing, you have an advantage to carry out physical inventory process with your operations still going on. With posting block, you have to stop your operations till your physical inventory count is taken. That's the difference. Now, the next is combination of physical inventory phases. So we discussed since last session that in three steps we are carrying out the physical inventory process: MI01, MI04, create physical inventory document, enter count and post the difference. तीन स्टेप में हमने इसको अब तक एग्जीक्यूट किया. दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब जो तीन स्टेप्स हैं उनको हम कंबाइन करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो अब तक जो हमने देखा वो क्रिएट फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट, एंटर काउंट एंड पोस्ट डिफरेंस. Now there are three ways in which we can combine this. So first is 2, 1 means you will enter the count and system will automatically create the physical inventory document. हम डायरेक्टली मटेरियल को काउंट करेंगे, उसका काउंट नोट करेंगे, सिस्टम पे जाएंगे, वी विल गो टू MI09 transaction code where we will enter the count and system will create the physical inventory document. तो अब तक हमने फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट पहले क्रिएट किया था, फिर काउंट एंटर किया था. अभी क्या कर रहे हैं हम? डायरेक्टली काउंट एंटर कर रहे हैं and system is generating a physical inventory document for that, and then in a separate step we will post the difference. So in this case we are combining the first two transactions. तो इसके लिए काउंट एंटर करने के लिए जो ट्रांजैक्शन कोड है वो अलग है. It's not MI04, you need to enter it using MI09. So we will use here MI09. MI09 से हम count enter करेंगे, system will generate the physical inventory document, and then with MI07 you will post the difference. In this one, we will create the physical inventory document separately with MI01. Okay, so in this we will create a physical inventory document separately using MI01, and the step to enter count and post difference is combined together. Transaction code will be MI0
8. So MI08 will allow enter the count and post the difference in single step. And third is we enter the count, we post the difference, and system will create the physical inventory document automatically. So this is transaction code MI10. So using these three different ways, we can simplify the physical inventory process. Now we will execute in system. So first is enter count and physical inventory document will be created. Transaction code is MI09. Let us check the stock here. 400 quantities is available in the stock. Now, so what we did, we counted the quantities of this material in this plant in this storage location, and the count is suppose 380. 20 क्वांटिटी का लॉस यहाँ पे हमको मिला, 380 हमने काउंट किया. नाउ वी विल गो टू MI09. सर म्यूट करती तुम्ही. अच्छा ओके सॉरी. सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन. तो हमने क्या किया, हमने मटेरियल डाला, काउंट डाला और उसको सेव किया, एंड सिस्टम हैज जनरेटेड अ physical inventory document here. We can display this document 10031, and you can see ये भी काउंट देख रहे हैं हम. ठीक है, इसका स्टेटस भी आप देख सकते हो, इट इज काउंटेड. 20 क्वांटिटी माइनस यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है. तो हमने काउंट एंटर किया, और काउंट एंटर करने के बाद सिस्टम ने फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया 10031. इफ यू गो टू हेडर, you can see a different document type is used for this, IZ. नॉर्मल फिजिकल इन्वेंटरी जो हमने किया था वहां पे IB था. जब हमने रिकाउंट किया तब अलग था, अभी अलग है. ठीक है. सो दीज डॉक्यूमेंट टाइप्स आर कॉन्फ़िगर्ड, और इसके बेसिस पे इसके नंबर रेंजेस होते हैं. तो अभी जो नंबर आया है वो डिफरेंट है, पहले जो नंबर आ रहा था वो भी डिफरेंट था. द नंबर रेंज वाज डिफरेंट. सो what we did, we entered the count and system created this physical inventory document number automatically. Now you take this, and against this you enter the, you post the difference. तो यहाँ पे 702 मूवमेंट टाइप हमको यूज करना है, बिकॉज दिस इज अ लॉस एंटर एंड सेव. सो दिस इज यू एग्जीक्यूटेड. तो MI09 में काउंट एंटर करना है. काउंट एंटर करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेगा. देन एक सेपरेट स्टेप में हमको उसका डिफरेंस पोस्ट करना है. देन द नेक्स्ट वन इज MI08. We will create physical inventory document first, and then we will combine enter count and post difference. So I'll create a physical inventory document now, MI01. Enter the material and save it. 10032 is created. Display it. यहाँ पे देखो इसका IB डॉक्यूमेंट टाइप है. तो हमने नॉर्मल फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया 10032. नाउ instead of entering the count in MI04, we will use MI08. In MI08, count and difference will be posted together. MI08 post count and difference, enter.
तो यहाँ पे हमने काउंटेड क्वांटिटी डाला, फॉर एग्जांपल 410। अभी सिस्टम का स्टॉक है 380, ठीक है। मैंने काउंट किया, 410 मिला, 410 मैंने यहाँ पे डाला, एंड हियर आई कैन स्पेसिफाई द रीजन फॉर पोस्टिंग द डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं काउंट भी डाल रहा हूँ और रीजन फॉर इन्वेंट्री डिफरेंस पोस्टिंग, तो मैं काउंट और डिफरेंस दोनों एक साथ पोस्ट कर रहा हूँ। सेव इट। So you can see difference in physical inventory document posted. Now you display this physical inventory document and check the physical inventory history. You can see the status is also updated as counted and adjusted. Now the last one. Okay, 410. Now the last is MI10. तो आपने काउंट ले लिया, अभी यहाँ पे 410 अपना सिस्टम का स्टॉक है। फोर 10 सिस्टम का स्टॉक है। अभी हमने इसका काउंट लिया, काउंट आया सपोज 420। So what we will do, we will go to MI10. So here you will enter the count, you will post the difference, and a physical inventory document is created automatically. तीनों एक ही ट्रांजैक्शन कोड में हम क्रिएट करते हैं। एंटर द मटेरियल, एंटर द काउंट क्वांटिटी काउंटेड 410, सॉरी 410 सिस्टम का स्टॉक है, यहाँ पे मैंने 420 दिया। एक सेकेंड, मटेरियल डाला, काउंटेड क्वांटिटी डाला, एंड हियर यू कैन सिलेक्ट द रीजन आल्सो। ठीक है, तो हमने पहले काउंट लिया, फिजिकल काउंट किया उसको, and then in MI10 we are entering the count, we are entering the reason for posting it, and we are going to post it. Once we post it, system will create the physical inventory document. Save it, and you can see difference in physical inventory document 10033 posted with material document. Posting हो गया, उसके बाद सिस्टम ने क्या किया, फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया 10033, डिस्प्ले इट इन MI03. You can see counted, adjusted. So this is how the physical inventory process is carried out with simplification. बुक इन्वेंटरी फ्रीजिंग भी देखा हमने, पोस्टिंग ब्लॉक भी देखा, एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी भी देखा। तो इसके साथ फिजिकल इन्वेंटरी का जो चैप्टर है वो खत्म होता है।